needs. For example, we are saying, okay, this is Sakkar University. So we have the problem of assuming we have the problem of before CMS, before PeopleSoft ERP, what were the things? Things probably, maybe things before such systems were maintained and managed through the registers, the manually, the book and paper. For example, we take an example of automatic, smart attendance system. So before that, what was there? There was a register for probably when we were the kids. There was the register teachers used to come and write their name and sign. Okay. So same goes. I mean, this was the problem. So when somebody came to automate this, so now that somebody is I'm, and you guys are the developers. So I came, okay, guys, can you develop any system which is going to automate by this type of work? So for example, he explained what he needs, what he wanted to implement. So that is called the requirements. These are the requirements provided by the customer. In this case, I'm the customer. So now what came in my mind, I just explained. I said, okay, these are my problems, automate them, are the needs, whatever we call it. So now a few important things can be during the development. For example, I said, okay, I want the record of monthly record. So is that guy has the registers, I mean, those magazines, those books. Okay. So, I mean, these are based on the monthly. Your system is going to give the record, the print of that record of the 10 years. So that is, and to implement this, you need the server, storage servers, but customer do not know about the storage servers. Anyways, when we start developing, few important things come in. For example, maybe we use any software, we come up with the new requirements. Anyways, the new requirements emerge when that software is used. So guys, we have discussed topic, I mean, so many times. So let me tell you the condition of our course. Okay. So the course, we are left with only 3 chapters. This is going, so the third one is this one, means after this one, we will have the only 2. So today I'm going to try to finish 9 and 10 chapters, and we will be left with only 1. So, I mean, because you know that we have the final schedule of your final examination has published. I mean, you have received maybe, or maybe it is about to be finalized. So that is proposed 11th January. So definitely you need few days for the preparation. I want to tell you, okay, if we are going in depth of these, definitely we need time. So let me know, are you ready for the extra classes? In case you want, I explain this in very depth of my knowledge or the experience. जी सियार जल्दी बताएं. नहीं सर, एक्स्ट्रा क्लासेस नहीं होनी चाहिए सर, कंप्लीट करें बस. Okay, then I'll be specific to the instead of giving the scenarios. For example, normally I used to talk about the ERP and MS. पेपर भी सर होगा या डीप इतने मुश्किल नहीं है आवाज. Any question, guys? सर पेपर भी नॉर्मल होगा या वो भी डीप होगा? जैसे मैं एक्सप्लेन करता हूँ उसी हिसाब से पेपर होगा.
Okay, guys. ठीक है. So the software change, we know that the business environment may change. For example, we have the coronavirus. For example, business environment previously before the coronavirus was something different. People were moving towards the attendance system, biometric attendance system. For example, fingerprints market में थे. अब वायरस की वजह से हमारे पास definitely the business environment ऐसे change हुआ कि people are avoiding fingerprints, touching the devices. So we came up with the face recognition pairs. I mean, the face recognition, those attendance systems. So we have installed in Sakhar IB. Anyways, the errors must be repaired. New computers and equipment is added to the system. The performance or reliability of the system may have to be improved. A key problem for all organizations is the implementation and managing the change to their existing software systems, and definitely implementing and managing the change. डेवलपमेंट हो रही है और चेंज रिक्वेस्ट आ रही है, अकोमोडेट करनी है, तो डेफिनेटली हमें पता है कि बीइंग द सॉफ्टवेयर डेवलपर्स एक चीज को चेंज करने से कुछ प्रॉब्लम्स, फॉर एग्जांपल एक चीज हमने चेंज की तो इट क्रिएट्स द एरर्स, या एक एरर की वजह से एक से ज्यादा एरर्स और 10 एरर्स और अपीयर हो जाते हैं. ओके, सो एनीवेज, importance of the evolution, we know that. So for example, importance, organizations have huge investments in their software systems. They are critical business assets. To maintain the value of these assets to the business, they must be changed and updated. The majority of the software budget in large companies is devoted to changing and evolving the existing software rather than developing new softwares. Or definitely evolution इसीलिए important है कि हर कोई जो है नया नहीं बनवाना चाहता. So whatever the change is, they want to change that, update that. और आप देख रहे होते हैं कि स्मार्टफोन्स एप्लीकेशंस या iOS एप्लीकेशंस हमारे पास अपडेट होती रहती हैं. या हम पॉइंट ऑफ सेल सॉफ्टवेयर से रिलेटेड एग्जांपल लें तो बिजनेस या जो है ना, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कानून पहले था कि सेल्स टैक्स विल बी paid by the owner of the shop. Okay, so now what happened in this Naya Pakistan? So we came up with a sales tax is paid. Previously, it was also paid by the customer, but it was not shown in the bill. So अभी आप देखेंगे कि sales tax का ऊपर अलग से एक खाना बन के आता है कि हाँ प्राइस अगर इसकी 5,000 है तो डेफिनेटली 6,000 बन जाती है या whatever the percentage of that tax. Anyways, ये भी एक चेंज आ गया. तो इस चेंज की वजह से क्या वो पॉइंट ऑफ सेल सॉफ्टवेयर दुकानदार नया बनवा लेते? तो डेफिनेटली they went for the changing in it. Okay. Anyways, moving ahead, so we have the spiral model of the development evolution. So we know that it is spiral, and definitely spiral में हमारे पास is these are the circles. Okay, so specification, implementation, validation, and definitely we have the release, or what we call it, the deployment, or in other words, validation is there. So these are there in this. Okay, for example, in spiral we have specification का हम अगर example लेते हैं, the first stage is the requirements. उसके बाद थोड़ी सी एडवांस की तरफ हम दूसरी स्किल की तरफ मूव होंगे तो what it is के we have the requirements analysis and elicitation. थोड़ा सा और उसके डेप्थ में जाना है, ठीक है. और उसके बाद maybe you have the stage of interviewing the customer. Maybe you have the need of going into the the translation of somebody's text or somebody's speech. Anyways, moving ahead, evolution service. So the software development, then development के बाद हम है and evolution saying है. और एक टाइम आएगा कि उस सॉफ्टवेयर की रिटायरमेंट हो जाएगी कि डेफिनेटली जिस तरीके से टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है. तो हम अगर पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन का रिजर्वेशन सिस्टम का एग्जांपल उठाते हैं तो डेफिनेटली वो 80s से में ही कोबोल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बना था, एंड इट वाज a very slow system of the reservation. Okay,
सो जिस तरीके से टेक्नोलॉजी चेंज हुई है कि अभी कोबोल तुम देखें पाकिस्तान में क्या इवन पाकिस्तान में 10 साल पहले पढ़ाना बंद की गई है यूनिवर्सिटीज में, तो वो सिस्टम कैसे चल सकते हैं? चलो अभी तक चला था, रिसेंटली आई हैव हर्ड कि अभी उन्होंने चेंज किया है पीआईए ने, सो दैट वाज द सॉफ्टवेयर रिटायरमेंट एंड इट कम्स थ्रू द बाय टाइम. Anyways, moving ahead, evolution and servicing, we know that, okay, evolution क्या है, servicing क्या है, phase out क्या है, जिसको हम change कहते हैं या retirement कहते हैं. Software evolution processes है उसके बाद. Evolution processes, software evolution processes depend on the type of software being maintained, the development and processes used, skills and experience of people involved. अब जाहिर सी बात है कि जब चलाने की बात आती है तो उस डेफिनेटली वो तो डिपेंड करता है कि सॉफ्टवेयर किस किस्म का है, छोटा है, बड़ा है, कॉम्प्लेक्स है, इजी है, फाइनेंस से रिलेटेड है, नेटवर्क से रिलेटेड है, किस चीज से रिलेटेड है, सोशल नेटवर्क से रिलेटेड है, किस चीज से, कि डेटा उसमें जो शेयरिंग हो रही है स्लो हो रही है, नहीं हो रही, क्या है, टेराबाइट्स में है, वो व्हाटएवर द डेवलपमेंट प्रोसेस इज यूज्ड, कि किस किस्म के डेवलपमेंट प्रोसेस से वो बनाया गया है, वाटरफॉल है, रीयूज है, इंक्रीमेंटल है, एजाइल है, the skills and experience of the people involved. चलो जिस तरीके से भी बनाया गया है, तो क्या वो जो चलाने वाले हैं या जो स्टेक होल्डर्स हैं इस सिस्टम के, वो किस किस्म के, वो स्किल्स एंड एक्सपीरियंस है या नहीं है? अब आप एक अच्छा सा सॉफ्टवेयर, एक छोटा सा sorry guys, so definitely skills and experience चलाने वाला जो सॉफ्टवेयर चलाएगा उस पे भी डिपेंड करता है कि वो खराब कर ले, वो जो है ना, आप अब देखें कि फॉर एग्जांपल कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट सखर आईबीए का वो एक प्रॉपर तरीके से कंप्यूटर को चलाएगा एज ए एंड यूजर, एक अनपढ़ और भले टच स्क्रीन हो, जिसकी एजुकेशन इतनी ना हो, एक्सपीरियंस इतना ना हो, स्किल्स इतने ना हो, तो डेफिनेटली वो जो है पॉसिबिलिटी है कि वो सॉफ्टवेयर को करप्ट कर दे, स्लो कर दे. कैश मेमोरी, हिस्ट्री, लॉग एंड एवरीथिंग आर गोइंग टू बी स्टोर्ड, तो डेफिनेटली वो डेटा कैसे हैंडल हो रही है, तो वो एफिशिएंसी सिस्टम की कंप्रोमाइज हो सकती है. Proposals for change are driver for the system evolution. जाहिर सी बात है कि अब चेंज की जो डिमांड आएगी तो वो एवोल्यूशन का पार्ट है, ठीक है, चाहे वो उसमें क्या नाम है कि अपडेट की शक्ल में आए, ओके. Then we have the change identification and evolution continues throughout the system lifetime. वही बात चेंज आती रहेगी. अभी आप एग्जांपल छोटा सा ले लेना, कितनी आती हैं एक स्मार्टफोन्स एप्लीकेशंस की. Anyways, change identification and evolution processes में हमारे पास assume करते हैं कि we have a system, okay. So new system, then we have the change identification process, change proposals and software evolution process. अब change proposal identify definitely होंगे, और उसके बाद हमारे पास एवोल्यूशन है, एवोल्यूशन में चेंजेस आएंगी, एवोल्यूशन में एक चेंज आई, ठीक है ना, उसको हम कहते हैं न्यू सिस्टम, और वो जो है डेफिनेटली आइडेंटिफाई, उसके बाद उस न्यू सिस्टम प्रोसेस होगा कि किस तरीके से वो चेंज, उसको चेंज किया जाएगा. फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है ऑटोमेटेड अटेंडेंस सिस्टम है, फिंगरप्रिंट्स, previously fingerprints were used, so अब जो है इस आइडेंटिफिकेशन में पता चला कि हाँ फिंगरप्रिंट्स यूज होती थी, जो पर्पस है वो सेम है, तो डेफिनेटली वी आर मूविंग टुवर्ड्स द फेस रिकॉग्निशन, ओके. सो अब इसमें आ जाएगा एंड देन चेंज प्रपोजल्स. अब प्रपोजल्स की पूरी एक्सप्लेनेशन कि ठीक है भाई फिंगरप्रिंट्स थे और अब जो है ना फेस रिकॉग्निशन, इस किस्म का डिवाइस आएगा, इस किस्म की
डेफिनेटली उसमें जितने भी इश्यूज हैं, कैमरा इज स्टिल्ड, कैमरा इज इन मूविंग पोजीशन, इज द मोबिलिटी, बंदा जिस तरीके से खड़ा हुआ है उसके मतलब के उसके हिसाब से कैमरा मूव करे इंस्टेड ऑफ के बंदा ऊपर नीचे हो, साइड पे हो। एनीवेज द सिस्टम एवोल्यूशन प्रोसेस, अब इस किस्म का डिवाइस है या सिस्टम है हमारे पास, या क्या वो टेक्नोलॉजी या वो जो हार्डवेयर है अवेलेबल है पाकिस्तान में या नहीं, व्हाट एवर, तो हमें पता है सिंपली ये उसी तरीके से छोटा सा कंपोनेंट हो या एक छोटी सी रिक्वायरमेंट की चेंज रिक्वेस्ट हो, तो उसका सिस्टम सेम ही होगा, उस डिजाइन में फिर इंटीग्रेट होगी, फिर इम्प्लीमेंट होगी, फिर उसको टेस्ट किया जाएगा, एंड देन डिफरेंट जो टेस्ट जो है हम पहले से कवर कर चुके हैं कि किस किस्म की टेस्ट हैं। तो यूनिट टेस्ट है हमारे पास, तो एक वो यूनिट बना है ना रिक्वायरमेंट से रिलेटेड, वो फिर इंटीग्रेट होगा और फिर आप उस पे जो है ना इंटीग्रेशन टेस्टिंग लगाएंगे। Anyways, software evolution process. So it's again the very simple. So what it is, we have the change request. So impact analysis. Okay, release planning. अब देखेंगे कि release planning और change implementation. So all this, and then in release planning we have the what? Fault repair, platform adaptation, सिस्टम एनहेंसमेंट। अब आप देखें कि रिलीज जब होगा तो उसकी प्लानिंग होगी कि क्या उस कंपनी में पहले है कोई सॉफ्टवेयर है ऑलरेडी यूज कर रहे हैं, क्या उसमें इंटीग्रेट तो नहीं होगा, उनके नेटवर्क के साथ अटैच तो नहीं होगा, मे बी उनका जो डेटाबेस है या जो उनके पास सर्वर्स हैं उसमें ही यूज नहीं होगा, whatever. Okay, then we have the fault repair. If in case of the repair, faults appear, definitely that is the integrated system. अगर एक चीज में fault आ गया तो maybe the other components of that complete system are going to be affected. So, and then we have the system enhancement. अब सिस्टम एनहांसमेंट, इट्स स्केलेबिलिटी डेफिनेटली, कि अब आप जाहिर सी बात है कि उससे इंटीग्रेट हुआ है तो उसकी फिर स्टोरेज का इशू होगा, मे बी हो सकता है कि ऑलरेडी द स्टोरेज सर्वर वन, maybe we need another one because of integration of this system. Anyways, then change, ये सब रिलीज प्लानिंग में देखते हैं। फिर हमारे पास चेंज इम्प्लीमेंटेशन है। अब इम्प्लीमेंटेशन के बाद हम चेक करते हैं कि ठीक से इम्प्लीमेंट हुई या नहीं हुई है, तो वी अहेड, अगर सही हुई है तो वी आर गोइंग टू integrate with the system release, and otherwise we are moving back to the planning where we need to improve. Anyways, change implementation है, उसके बाद हमारे पास proposed changes implementation क्या है? It's a very simple change implementation. अब भाई हाँ, एक change की request आई है, ठीक है, और उसको हम कहते हैं proposed changes, and proposed changes जो हैं वो हम definitely requirements जो already हैं उनमें changing है ना, तो उसके हम analysis लगाते हैं। वही same आ गया हमारे पास fingerprint और अपना face recognition का recent example, उसमें requirements analysis करते हैं। analysis में पता चला कि हाँ भाई हमारे पास जो hardware है वो इस तरीके का होगा, पहले तो फिंगरप्रिंट्स थी तो अब फेस रिकॉग्निशन है, तो डेफिनेटली अगर फेस रिकॉग्निशन है तो स्टोरेज की कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी क्योंकि इट टेक्स द पिक्चर्स इंस्टेड ऑफ अदर थिंग्स। ओके, द रिक्वायरमेंट्स अपडेट, देन रिक्वायरमेंट्स विल बी अपडेटेड। जैसे हम खुद ही हम अज्यूम करते हैं कि आप अपना क्वेश्चन पेपर इवन हल करते हैं तो 2 सवाल 3 सवाल आप कर लेते हैं तो उसको टिक मार्क कर देते हैं कि इट मींस के 3 I've done with 3 and remaining are the 3. So whatever. So update hogi, then we start the software development. And it's moving ahead, change implementation. Again, I've talked a lot on this. We are skipping urgent change request. How we are going to implement the urgent change request. वो change request उसमें फर्क इतना है कि we need very rapid response. जब urgent हो गया तो for example urgent किस किस्म के होते हैं, maybe operating system में issue आ गया है तो डेफिनेटली उसकी वजह से जल्द और ऑपरेटिंग सिस्टम में अगर आता है तो डेफिनेटली पूरा सिस्टम आपका इफेक्ट होता है। अर्जेंट
इसीलिए आया है कि वो कंपोनेंट इंपॉर्टेंट है। अब एटीएम मशीन्स चलना बंद हो जाएं, उसकी रिपेयर के लिए उसको अर्जेंटली कहा जाएगा ना कि मैं अगर एचपीएल बैंक हूं, तो अगर उसकी रिपेयर एनुअल रिपेयर की बात है, एनुअल मेंटेनेंस की बात है, कि वी यूज्ड टू आस्क देम कि जल्द से जल्द इसको रिपेयर कर लें। Anyways, so that is called the urgent change request. So क्या है emergency repair process में क्या है? Change request, analyze source code, modify source code, deliver the modified system. Same goes कि we are dealing with purely with the code. Okay. So the agile methods and evolution. Evolution is a simply continuation of the development process based on the frequent system releases. Automated regression testing is particularly valuable when changes are made to a system. Changes may be expressed additional user stories. Okay, so it's a same thing like क्योंकि maintenance है तो अपना यूजर स्टोरीज एजाइल में है हमारे पास, वो रिक्वायरमेंट्स है, यहाँ पे वो एडिशनल यूजर स्टोरीज हैं. हैंडओवर प्रॉब्लम्स where the development team have used an agile approach, but the evolution team is unfamiliar with the agile methods and they prefer a plain based approach. अब वही बात आ गई कि एक बंदा है जिसकी स्किल्स नहीं है उसमें. अब सब फॉर एग्जांपल के भाई डेवलपमेंट अगर वो प्लेन ड्रिवन में हुई है तो मेंटेनेंस, क्योंकि मेंटेनेंस समटाइम्स या एवोल्यूशन वाला पोर्शन आप किसी और कंपनी को भी देते हैं. आप अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर तब कहलाएंगे कि आपने ही सॉफ्टवेयर जो बनाया है और उसकी मेथड हेलो गाइस, कैन यू हियर सर मी? आवाज आ रही? ये सर आ रही है आवाज. ओके सर आवाज बहुत कम आ रही है सर. ओके नाउ तो जाहिर सी बात है कि प्लेन ड्रिवन में बनाया गया है और मेंटेनेंस और प्रॉब्लम्स तो आएंगी और इसको हैंडओवर प्रॉब्लम्स कहते हैं. ये एक टेक्नोलॉजी में और मेंटेनेंस में किसी और में हो, और जाहिर सी बात भी नहीं है कि बनाने वाला आपसे करवाए. एनीवेज, मूविंग अहेड, लेजेसी सिस्टम. Legacy systems are older systems that rely on languages, technology that are no longer used. Hello, Sahil कौन? Who is? Okay, and legacy systems, अब वही simply I gave the example of COBOL में PIA का जो बना हुआ था, अब COBOL यूज भी नहीं हो रही है. अब मिसाल के तौर पे जो न्यू जनरेशन है, आपने COBOL पढ़ी है आपकी क्लास ने, आपकी बैच ने? नहीं सर. ठीक है, अब ये आपके लिए लेजेसी हो गया, लेजेसी सिस्टम हो गया, और आपके पास एक कॉन्ट्रैक्ट आए कि भाई अपना पीआईए का जो सिस्टम है उसमें चेंजेस करनी है, मेंटेनेंस या व्हाटएवर. तो आप अजीब हो जाएगा ना कि यू आर इवन नॉट अवेयर ऑफ दैट सिस्टम. सो इट सेज कि legacy systems are older systems that rely on languages and technology that are no longer used for new systems development. समझ आ गया? Okay. Yes, sir. So same, this is the thing, elements of the legacy system. We have the simply the software application software है हमारे पास, application data है, business policies है, business processes है, system hardware है, support system है. So same thing if we, this is, it's not necessary कि design ऐसी होनी चाहिए, elements वही हैं कि हमारे पास एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जाहिर सी बात है वो उससे जो डेटा आएगी, जो यूज होगी उसमें डेटा, तो डेफिनेटली we have it uses the application data, and definitely which business process is used on this. Okay, so that application is again, and business policies and rules कि वही for example if we talk about
the trends. It embeds the knowledge of the business policies and rules. So business policies, एक छोटा सा point of sale का software का example लेते हैं हम. अब हर एक software की अपनी business logic होगी system की. तो सॉफ्टवेयर से पॉइंट ऑफ सेल सॉफ्टवेयर है तो डेफिनेटली उसमें क्या होगा, डिस्काउंट्स होंगे, इन्वेंट्री मैनेजमेंट होगी फॉर एग्जांपल. ओके, सो मे बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ द आइटम्स हो सकता है. फॉर एग्जांपल आपको पता चले कि हाँ आज के दिन से जो है ना इस पॉइंट ऑफ सेल KFC में ज्यादा से ज्यादा जो है ना डील बिकने वाली कौन सी है. तो definitely whatever you want to use. So we have all this hardware hoga and then support of the software. Anyways, moving ahead, legacy system components में ये हमने जैसे इसको देख लिया कि सॉफ्टवेयर हार्डवेयर है, सपोर्ट सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन डेटा है, बिजनेस प्रोसेसेस है, बिजनेस प्रोसेसेस, पॉलिसीज एंड रूल्स. व्हाट आई हैव टोल्ड. लेजेसी सिस्टम्स की लेयर्स हैं हमारे पास वही सेम के हार्डवेयर, ये लेयर्स कॉमन है. अब आप देखेंगे कि हमारे पास हार्डवेयर है, प्लेटफॉर्म एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सॉफ्टवेयर है, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, बिजनेस प्रोसेसेस है. यही आपने अगर देखा होगा कि कवर किया होगा अपना आर्किटेक्चर्स में लेयर्ड जो था. फॉर एग्जांपल वी टेक एन एग्जांपल ऑफ उसमें कि भाई हम सॉफ्ट कंप्यूटर्स का जो है अपना कंप्यूटर डेस्कटॉप. सो हार्डवेयर है, उसके ऊपर जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है, उस हार्डवेयर को चलाने वाला और उस ऑपरेटिंग सिस्टम में फिर जो है ना एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से फिर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बिजनेस प्रोसेसेस या बिजनेस मॉडल्स या बिजनेस पॉलिसीज एंड रूल्स हैं, या जो है अपना एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं, एप्लीकेशन इन सेंस के GUI. Okay, the legacy system replacement. The legacy system replacements is risky and expensive, so businesses continue to use these systems. वही बात है कि एक चीज जो जिसके आपके पास एक्सपर्ट्स भी मार्केट में नहीं है, या आई मीन कुछ भी. फॉर एग्जांपल हम अगर डेली लाइफ से रिलेटेड एग्जांपल लेते हैं कि आज वो कारपेंटर्स भी नहीं है कि जो अपना कैलीग्राफी आई मीन जो डिजाइन कर सकें, कि वुडन डिजाइन्स इंट्रोड्यूस कर सकें या उसको मेंटेन कर सकें. सो डेफिनेटली या कोबोल का हम एग्जांपल लेते हैं कि भाई वो PIA में है, या तो डेफिनेटली इसको कौन मेंटेन करवाएगा. इफ आई एम द CEO ऑफ PIA, मैं तो रिस्क नहीं उठाऊंगा कि इसको मेंटेन करवाऊं जिस टेक्नोलॉजी में बना हुआ है कि उसके एक्सपर्ट्स भी नहीं है. डेफिनेटली यू आर गोइंग टू रिप्लेस दैट. ओके, या फिर आप जो है ना इसको रिटायर कर देते हैं कि सिस्टम रिप्लेसमेंट इज रिस्की फॉर नंबर ऑफ रीजंस. Lack of complete system specification, tight integration of system and business processes, undocumented business rules embedded in this legacy system, new software development may be late and or over budget. Okay, legacy system change. Legacy systems are expensive to change for a number of reasons. No consistent programming style, use of obsolete programming languages with few people available with these language skills, inadequate system documentation, system structure degradation, program optimization may make them hard to understand, data errors, duplication, and inconsistency. These are all things we have already discussed, guys. Moving ahead, legacy system management. Organizations that rely on legacy systems must choose a strategy for evolving these systems. Definitely, they scrap the system completely and modify business processes so that it is no longer required. Continue maintaining the system. Transform the system by re-engineering to improve its maintainability. Replace the system with a new system. वही options कौन से बचते हैं कि legacy system को maintain करने के लिए? कितना आप अपडेट करवाते जाएंगे कि टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट होती जाती है कि फॉर एग्जांपल के योर सिस्टम कैन नॉट बी ऑपरेटेड ऑन 3G टेक्नोलॉजी और 4G टेक्नोलॉजी, नॉट अपकमिंग टेक्नोलॉजीज 5G. मे बी आपका सिस्टम जो बनाया है कि वो नेटवर्क के साथ कनेक्ट नहीं हो सकता, सिंपल नेटवर्क के साथ. तो व्हाट यू आर गोइंग टू डू? कब तक आप, या जाहिर सी बात है कि ये रीजंस हैं कि either you continue maintaining the system or maybe you are going to re-engineer to improve its maintainability.
And maybe you're going to replace the system with new system. The strategy chosen should depend on the system quality and its business value. अब वही बात है कि आप अगर PIA जो है COBOL यूज कर रहा है, जो कि आज स्टूडेंट्स इवन यूनिवर्सिटीज ने पढ़ाना छोड़ दिया है, तो डेफिनेटली what you're going to expect from the upcoming youth, which is going to be graduated in computer science or software engineering or computer system engineering. So maybe and in this condition, this is going to be the legacy for you guys, and definitely what PIA is going to do. So if there is the maintenance issue in this, maybe there is the scalability issue in this, or the need, or maybe this system is going to be integrated with the already developed system, or the new system developed by the Sakurai, that PIA. So जिस सिस्टम के हमारे पास मार्केट में भी एक्सपर्ट्स नहीं है, स्किल्स नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, तो हाउ वी आर गोइंग टू डू दैट? एनीवेज, एन एग्जांपल ऑफ लेजेसी सिस्टम असेसमेंट. सो जाहिर सी बात है कि असेसमेंट जो है लेजेसी सिस्टम की, और ये भी कॉमन असेसमेंट है हमारे पास, business value and the system quality goes, okay, in 3-dimensional. For example, for example, we have the 1 2 3. So what it is, low business value, low quality. 4 5 values, the low business value, high quality, because you know that quality represents that 5. The high business value and high quality corresponding numbers, high business value, low quality again. So you have sometimes you have the business value and the quality. Okay, so that is going to be less or low or high, or whatever you set the criteria. Normally low, moderate, high. Okay, whatever you say. So legacy system categories वही जो already मैंने बता दिया आपको को low quality, low business value, which we are going to skip it, and the detail is given in this slide. Nothing is technical to talk. Business value assessment, वही assessment should take different viewpoints into the account. अब जाहिर सी बात है कि system के end users हैं, उनकी असेसमेंट अपनी होगी. अब वो जाहिर सी बात है कि वो किस तरीके से सिस्टम यूज कर रहे हैं उसके हिसाब से होगा. बिजनेस कस्टमर्स, लाइन मैनेजर्स, IT मैनेजर्स, सीनियर मैनेजर्स. So definitely interviewing different stakeholders and collect the results. Anyways, issues in business value assessment, the use of the system, business process that are supported, system dependability, system output, वही system, the use of the system, if the systems are only used occasionally or by a small number of people, or they may have a low business value. वही बात है कि rarely system खोल के use कर लिया, ठीक है, या मे बी ऑन भी है तो वो इतना rarely, एक system है, assuming कि we have the hospital management system, and another is that we have the reservation system. So definitely the usage of both systems is different. Okay, hospital में maybe number of people are coming, higher than the small coach service. Okay, anyways, moving ahead, the system quality assessment, business process assessment में है, इसमें the environment assessment है and application assessment. इसमें भी ऐसी कोई चीज नहीं है कि जो डिस्कस की जाए. आप खुद ही self explanatory है. Business process assessment भी self explanatory है. We are skipping factors used in environment assessment. Supplier stability है, failure rate है, age है, performance है. वही है कि हम कोई एक छोटा सा भी अगर हम product लेते हैं तो definitely we assess that. The support requirements, maintenance cost, interoperability, understandability, documentation, data, performance, programming language, configuration management, test data, personal skills. So all these are the self-explanatory. Please, you can go through this in this, this table, 2-dimensional table we have, 2-columned.
So system measurement, again, how you're going to measure that? You may collect the quantitative data to make an assessment of the quality of the application system. For example, the number of system change requests, higher this accumulated value, lower the quality of the system, number of different user interfaces used by the system. The more interfaces, the more likely it is that there will be the inconsistencies and redundancies in these interfaces. The volume of the data used by the system. अब देखिए, आप एक छोटा सा एग्जांपल है कि आप कितने हम एक स्मॉल कोड एज अ कोडर का भी एग्जांपल लेते हैं, तो कोडिंग आप ज्यादा लाइंस में जो कोडिंग करता है, फॉर एग्जांपल एक छोटा सा कैलकुलेटर बनाने के लिए कोड है, तो एक बंदा जो है हंड्रेड्स ऑफ लाइंस में बना के आए, मे बी 100 आई मीन के, या एक 2 से 300 लाइंस में भी बना के आ सकता है कि फॉर एग्जाम्पल के सी में एक जो है ना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूज करता है, वो कुछ ही लाइंस में आपको वही काम करके देता है। तो डेफिनेटली इट्स अ मेजरमेंट क्राइटेरिया। ओके, वही फिर जो है ना इंटरफेसेस की बात है, जितना सिंपल हो, जितना कम हो, उतना बेहतर है, उसकी क्वालिटी अच्छी है। एनीवेज, ये कॉमन है। सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस है उसके पास, हमारे पास द मेंटेनेंस में वही चीजें हैं जो हमने डिस्कस कर ली हैं कि फॉर एग्जांपल क्या होता है उसमें, ट्रेनिंग है और मेंटेनेंस है। फिर टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस है हमारे पास, फॉल्ट रिपेयर्स, एनवायरमेंटल अडेप्टेशन, फंक्शनैलिटी एडिशन एंड मॉडिफिकेशन। फॉल्ट आ जाएगा, 3 चीजें हो सकती है ना, फॉल्ट आ जाएगा या जो है ना आपने सिस्टम बनाया है, उनके पास कंपनी जिसके लिए बनाए उसके पास और भी सिस्टम्स हैं, तो उस एनवायरनमेंट में अडेप्ट करवाना है, अडेप्टेशन का इशू है जिसको हम इंटीग्रेशन का इशू कहते हैं। देन फंक्शनैलिटी, पॉसिबिलिटी है कि उस सिस्टम में कोई फंक्शनैलिटी ऐड हो या कुछ कोई चीजें मॉडिफाई हो। सो ये टाइप्स हैं इसकी मेंटेनेंस की। नॉर्मली जो परसेंटेज है डिस्ट्रीब्यूशन एफर्ट्स की, कि एनवायरमेंटल अडेप्टेशन 19% है इज पर द सर्वे, फॉल्ट रिपेयर 24% है, फंक्शनैलिटी एडिशन और मॉडिफिकेशन 58% है। अब ये जो सर्वे कंडक्टेड बाय सोमरविल्स, दैट बुक व्हाट वी हैव, not the new one. Normally he wrote the book in 90s probably, so इसको अपडेट इस लेटेस्ट भी नहीं है, 2-3 साल पुरानी है बुक, assuming maybe, so not sure, yeah, maybe this one is the 8th edition or 10th edition. Anyways, moving ahead, depending on this survey कि हमारे पास fault repair, environmental adaptation and functionality addition 58%, 19%, 24% respectively. Okay, maintenance cost, जाहिर सी बात है कि वही बात आ गई कि कॉस्ट हमने जो ऑलरेडी डिस्कस किया है, डिपेंडिंग ऑन द सिस्टम, डिपेंडिंग ऑन द अडेप्टेशन, डिपेंडिंग ऑन व्हाट टाइप ऑफ सिस्टम और द इन व्हिच टाइप ऑफ platform or the languages or the whatever is skills are used. Maintenance prediction भी important है। maintenance prediction अब जो है क्या चीजें देखनी चाहिए इसमें कि what parts of the system will be the most expensive to maintain, what will be the lifetime maintenance cost of, what will be the cost please put your mics on mute. What parts of the system are most likely to be affected by the change request? How many change requests can be expected? So all these need to be and definitely trained or answered before this is simply the prediction of this, and when we ask about these questions, we have the complete knowledge of these questions. So this is the maintenance prediction. So change prediction is same like that. Predicting the number of changes requires an understanding of the relationship between the system and its environment. Tightly coupled system require changes whenever the environment is changed. Factors influencing this relationship are the number and complexity of the system,
interfaces, number of inherently volatile system requirements, the business process is where the system is used. Again, we have discussed this in detail. Complexity matrix में हमारे पास the complexity of the control structures, complexity of the data structures, object, method, procedure, and module size, all this definitely. Prediction of the maintainability can be made by assessing the complexity of the system components. ये इस पे भी depend करता है कि maintenance का. The process metrics may be used to assess the maintainability, number of requests for correcting the maintenance, average time required for the impact analysis, average time taken to implement a change request, number of outstanding change requests. If any or all of these is increasing, this may indicate a decline in the maintainability. So definitely ये भी हम बहुत detail में cover कर चुके हैं. Then definitely एक और component हमारे पास आता है software re-engineering. So restructuring or rewriting part or all of the legacy system without changing its functionality. Applicable where some but not all subsystems of larger system require frequent maintenance. Re-engineering involves adding effort to make them easier to maintain. The system may be restructured and redocumented. वही सॉफ्टवेयर री-इंजीनियरिंग एक कंपोनेंट है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में re-engineering. So what we are going to we transform the legacy systems into that based on the new technologies, not means focusing on the functionality, what we call it, the requirements पे affect ना हो. जो आजकल entertainment की दुनिया में कहते हैं कि remix, जो है फलां गाने का remix आ गया, तो definitely based on the technology they have changed. इसमें software engineering में हमारे पास re-engineering है. Anyways, advantages of re-engineering are simple, not to discuss, self-explanatory, reduced risk, reduced cost. Okay, re-engineering process है, simple है, based on the arrows, explanation is very simple, original program है, source code translation है, reverse engineering है, program structure. Anyways, source code translation activities हैं, ये reverse engineering. I mean, program reverse engineering and re-engineering में फर्क है, ये थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करें. Reverse engineering में analyze the program to understand it. ठीक है, अब reverse engineering के COBOL को कोड को समझना, ठीक है ना, और COBOL को change कर देना is re-engineering. ठीक है, पहले तो definitely समझेंगे कि उसको एक initial stage is the reverse engineering. Okay, then we are moving towards the re-engineering. Program structure improvement. Reverse engineering, आप CCTV कैमरा का वीडियो देख रहे हैं, तो अचानक आपने किसी क्लिप को चेक करना है, आप पास करके पीछे जाएंगे आप. So what you are going to analyze it. Okay, reverse engineering. So analyzing it with the COBOL code, COBOL functions. How, I mean, it will be definitely easy, very easy. It means what you understood it is the reverse engineering. Now, once you understood, you're converting that into the smart, I mean, that technology, for assuming we have now the Java object-oriented programming. So now that converted into that is the re-engineering. Anyways, these are the simple activities. You can go through this. Re-engineering approaches हैं, ये भी self-explanatory. You go through this. Re-engineering cost efforts हैं, okay, factors. Go through this. Refactoring, we have already discussed. Refactoring and re-engineering क्या है, clear है. Bit smells and program code, वही duplicate code, long methods, switch statements, वही same चीजें हैं जो हम बार-बार discuss करते आ रहे हैं, depth में discuss कर लिए हैं. Go through this. So this was all about today's, I mean not today's, so this chapter 9. So next chapter we are going to start after 10 to 15 minutes break. So please go for break. Whatever, for example, let me check the time. So we have okay, so take 15 minutes break. We will come back and start another topic. So guys, let's meet after the 15 minutes break. So CR, can you pause the recording? Okay guys,
कैन यू? उसके बाद हमारा एक ही चैप्टर रहेगा, बच जाएगा। ओके, सो डिपेंडेबल सिस्टम्स, ये लेजेसी से रिलेटेड है, मतलब टेक्निकल नहीं है, इसको हम पहले कवर कर लेते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। So though, can you put on recording, Aftab? Okay, fine. It's already recording. So topics will be covered: the risk management, managing the people, teamwork. अब यहाँ पे आप देखें कि evolution तक तो हमने पूरा का पूरा कोर्स सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, यानी कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर रिक्वायरमेंट से लेके एवोल्यूशन तक हमने कवर कर लिया, यानी कि कोर्स हमारा टेक्निकली जो है, जो एवोल्यूशन वाला चैप्टर है वहां तक हमने कंप्लीट कर लिया। कोर्स एक्चुअली ये था, मगर हमें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के बारे में भी थोड़ा सा पता होना चाहिए। मेरे ख्याल में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आगे चल के आपका एक सब्जेक्ट भी होगा सेपरेटली, isn't it? Software project management are. So risk management, managing the people and teamwork. यहाँ पे प्रोजेक्ट स्टार्ट होने से पहले इसमें लोगों की इन्वॉल्वमेंट है, ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, ठीक है। प्रोजेक्ट की सक्सेस है, प्रोजेक्ट का फेल्यूर है। So the software project management, the concern with the activities involved in ensuring that the software is developed on time and within the schedule and the budget, और उसको ही हम सक्सेसफुल कहलाते हैं कि डेफिनेटली ये जो टारगेट्स थे वो अचीव हो गए। सक्सेस क्राइटेरिया क्या है? द डिलीवर द सॉफ्टवेयर टू द कस्टमर एट द एग्रीड टाइम, कीप इन ओवरऑल कॉस्ट विद इन द बजट, deliver the software that meets the customer's expectations, maintain a coherent and well functioning development team. वही चीजें हैं कि जो हम बार बार पढ़ते आ रहे हैं कि ये सब चीजें रिक्वायरमेंट से लेके एवोल्यूशन तक कैसे सक्सेसफुल बनानी है, चाहे इसमें हमारे पास प्रोक्योरमेंट से रिलेटेड है, कोई चीजें खरीदने से रिलेटेड है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म्स, एग्रीमेंट्स, लाइसेंसेस एंड एवरीथिंग से लेके लोगों की डेवलपमेंट टीम से लेके कस्टमर्स तक कैसे मैनेज करना है, हर चीज इसको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कहलाती है। और सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट डिस्टिंक्शंस, हमारे पास the product is, and we know that then that depends on the factors influencing the project management: the company size, customers, software size, software type, organization culture, software development processes. These factors mean that the project managers in different organizations may work in quite different ways. ये एक definitely depending on the people's experience and expertise, कि लोगों, हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि लोगों की मैनेजमेंट भी, जिसको हम ह्यूमन रिसोर्सेज कहते हैं, कि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप देखें कि डिफरेंट किस्म के एम्प्लॉइज होते हैं और उनसे कैसे काम लेना है, ये हर किसी का काम नहीं है। आप छोटा सा एग्जांपल आप अपनी क्लास का ले लें, ये स्किल्स पे डिपेंड करता है, पर्सनल कैपेबिलिटीज पे डिपेंड करता है कि मे बी कुछ जो है ना लोग बात नहीं कर पाते, कुछ जो है ना लेक्चर नहीं दे पाते, कुछ जो है ना रोस्टम पे बात नहीं कर सकते, कुछ पब्लिक स्पीकिंग से डरते हैं, तो हाउ दे आर गोइंग टू आस्क पीपल, क्योंकि कन्फ्लिक्ट में भी तो नहीं आना है ना कि आपके पास रिसोर्सेज भी नहीं है और आपके पास डेवलपमेंट टीम का जो मेंबर्स हैं उनसे कैसे काम लेना है, तो डेफिनेटली, और निकालना भी तो हल नहीं है ना कि फायर कर दे कि बंदा, फिर आपका सॉफ्टवेयर सिस्टम जो है इफेक्ट हो। एनीवेज, इस पूरी की पूरी मैनेजमेंट, इस किस्म के जितने भी इश्यूज हैं वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में हम देखते हैं। फिर डिपेंड करता है कि अब इफेक्ट्स कौन से इन्फ्लुएंस फैक्टर्स करते हैं, जो कि अभी मैंने रिसेंटली बताया कि कंपनी साइज, सॉफ्टवेयर कस्टमर्स का सॉफ्टवेयर साइज, सॉफ्टवेयर टाइप, organization culture, software development processes. These factors mean that the project managers in different organizations may work in quite different ways. ठीक है? यूनिवर्सल मैनेजमेंट एक्टिविटीज हमारे पास है, प्रोजेक्ट प्लानिंग है, रिस्क मैनेजमेंट है एंड पीपल मैनेजमेंट है। देन मैनेजमेंट एक्टिविटीज हमारे पास हैं रिपोर्टिंग एंड प्रपोजल राइटिंग। Okay, these are again we have discussed even proposal writing, तो जब हम physically class ले रहे थे उसमें हमने discuss किया था
जो याद है कि पेपर रूल्स, टेंडरिंग कैसे होती है, रिक्वेस्ट ऑफ प्रपोजल क्या और चीज होता है, टेंडर कैसे होता है कि वी ड्रॉप द एनवेलप्स ऑफ ऑल, एंड टेंडर की डेट होती है और मिनिमम जो प्राइस देता है, कोट करता है, उसको अलॉट हो जाता है. एनीवेज रिस्क मैनेजमेंट है हमारे पास. सेकंड, the risk management is concerned with identifying the risks and drawing up the plans to minimize their effect on a project. ये भी हमने डिस्कस कर लिया है. वही चीजें हैं, सेम चीजें हैं. रिस्क क्लासिफिकेशन है हमारे पास. देयर आर 2 dimensions of the risk classification. Type of risk, definitely the technical and organizational. What is affected by the risk? तो डेफिनेटली हम किस किस्म की रिस्क है, टेक्निकल है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है या ऑर्गेनाइजेशनल है, या मे बी आपके जो डेटा है वो सीक्रेट है या प्राइवेसी से रिलेटेड डेटा है, वो अगर ऑर्गेनाइजेशन जो एनवायरनमेंट है वहां पे प्राइवेसी का इतना ख्याल नहीं किया जाता, तो डेफिनेटली वो आपका जो सिस्टम बनने जा रहा है, जो बना रहे हैं आपकी डेवलपमेंट टीम, वो सीक्रेट नहीं रहेगा. जब सीक्रेट नहीं रहेगा तो उसका पर्पस नहीं रहेगा. तो डेफिनेटली ऑर्गेनाइजेशन में कैसे काम होता है, तो दैट अफेक्ट्स वेरी आई मीन put very important influence on the even success and failure of the project. The project risk affect the scheduler resources. Product risks affect the quality and performance of the software being developed. Business risks affect the organization developing or procuring the software. Then we have the examples of project, product and business risk. So वही सेम चीजें हैं. स्टाफ टर्नओवर है. अब जाहिर सी बात है कि मे बी आपके पास जो एक्सपीरियंस स्टाफ है वो चला जाए. अब क्या होगा कि कंप्लीट. ओके, देन वी हैव management change, hardware unavailability, requirement change, specification delays, size and underestimate, case tool underperformance, technology change, product computation, all are the self-explanatory terms. Risk identification है, उसकी फिर analysis है, फिर planning है, फिर risk monitoring है. ये भी risk management process है complete. So how it is going to be going to work? So risk is identified, and then definitely the analysis is analysis is conducted. Then in analysis we prioritize the risk list कि पहले जो है ना टॉप जो प्रायोरिटी पे कौन सी रिस्क को हैंडल किया जाए. ठीक है. रिस्क अवॉइडेंस एंड कंटीजेंसी प्लान्स, रिस्क मैनेजमेंट. अगेन इट्स वेरी इजी. Moving ahead, identification में हम technological risk, organizational risks, people risk, requirements risk, estimation risks, all these are already discussed. So detail is given in this table: estimation, organizational, people, requirements, technology, tools. Go through this risk analysis. What we are going to assess the probability and seriousness of the each risk. So nothing is here. Risk types and examples hain. Okay, so organizational financial problems, force in the project budget. So यही चीजें हैं, सेम हैं, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. इस टेबल को भी खुद कवर कर लें. Risk planning, we have already discussed. What if the questions, what if several engineers are ill at the same time? Now यहाँ पे project management की बात आती है कि how you are going to deal with it. कि आपके पास डेवलपर्स मैक्सिमम जो है ना बीमार हैं, छुट्टी पे हैं, नहीं आ रहे. What if an economic downturn leads to the budget cuts of the 20% for the project? What if the performance of open source software is inadequate and only expert on that open source software leaves? What if the company that supplies and maintains the software components goes out of the business? What if the customer fails to deliver the revised requirements as predicted? So these are all the questions need to be covered in the management. Definitely वही चीजें हैं जो कि common हैं, और वही मेन रीजन है कि 3-4 चीजें हैं जो कि प्रोजेक्ट में देखी जाती हैं, सक्सेस और अपना फेलियर को लीड करती हैं. कि शेड्यूल,
ठीक है, अब जाहिर सी बात है कि जो शेड्यूल है उस शेड्यूल पे मिलना चाहिए। अगर आपके पास लोग आते जाते रहेंगे कि तो डेफिनेटली डेवलपमेंट प्रोसेस विल अफेक्ट, मे बी द प्राइस, द कॉस्ट इज गोइंग टू बी अफेक्टेड। कि एक छोड़ के गया, फिर आपने हायर किया, फिर उसमें आपको पैसे लग गए इंटरव्यूज पे, इस पे, और फिर उसकी शायद सैलरी उससे ज्यादा हो, व्हाटएवर। ओके, सो these are the things need to be cleared first. Strategies to help the men manage the risk. ये वही चीजें हैं, self explanatory, go through this risk monitoring है, वही चीजें हैं, assess the each identified risk regularly to decide whether or not it is becoming the less or more probable. Also assess whether the effects of the risk have changed. Each key risk should be discussed at management progress meetings. मॉनिटरिंग तो ऐसे ही होती है ना कि जो चल रहा है, हाँ भाई आ जाए, टीम की मीटिंग्स हो गई, ओके, एंड देन वी हैव आई मीन उसमें फिर डिस्कस होता रहता है, एंड वी इसको हम क्वालिटी ऑफ मॉनिटरिंग भी कहते हैं कि ये जितने भी रिस्क से रिलेटेड, क्वालिटी से रिलेटेड चीजें हम उसमें देखते हैं, उसको हम क्वालिटी ऑफ मॉनिटरिंग कहते हैं। क्वालिटी ऑफ मॉनिटरिंग is again separate field in software engineering. Quality of monitoring, or what quality of service, okay, all both things are very important। okay, मॉनिटरिंग जब चल रहा होता है उसके दौरान ही यूज होता है। फॉर एग्जांपल ऑपरेटिंग सिस्टम में उसका एग्जीक्यूशन टाइम मॉनिटर करना है, उस पे लोड ज्यादा दे के मॉनिटर करेंगे, फिर उस पे एनालिसिस होगी, उसको हम क्वालिटी ऑफ मॉनिटरिंग कहते हैं। रिस्क इंडिकेटर्स जो हैं वो वही सेम है, एस्टिमेशन, ऑर्गेनाइजेशनल, पीपल रिक्वायरमेंट्स, टेक्नोलॉजी, टूल्स, these are again the very simple to understand। managing the people, अब ये भी कॉमन चीज है कि मैनेजिंग द पीपल, आम जो लोग हैं, अब उसमें काम कैसे लिया जाता है, ठीक है ना, द मोटिवेशन ऑफ द पीपल, देन वी हैव द कंसिस्टेंसी, रेस्पेक्ट, एंड वी हैव I mean the inclusion, honesty, and all these are things need to be checked into the people। okay, human resource, what I mean that human needs hierarchy। सो फिजियोलॉजिकल नीड्स है हमारे पास, सेफ्टी नीड्स है, सोशल नीड्स है, स्टीम्ड नीड्स हैं। अब जाहिर सी बात है कि दिस इज अ पिरामिड। कुछ जो है ना बेसिकली लोग अपना बेसिक नीड्स की लेवल पे काम करते हैं, कुछ उसकी तरफ आते हैं कि नहीं भाई नीड्स पूरी हो रही हैं तो उसके अलावा कौन सी सेफ्टी नीड्स हैं कि हाँ भाई आई हैव द प्रॉपर्टी एंड आई हैव द असेट्स, एंड मी माई सेल्फ एंड असेट्स नीड टू बी safe। then definitely we have the social needs, okay, and esteemed needs। look at these things in detail। social provide the communal facilities, allow informal communication or via social networking। recognition of the achievements, esteem में normally यहाँ भाई appreciation certificate दे दिया, appreciation reward दे दिया, okay, how you are going to encourage your team कि बोनस दे दिया। सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन, कुछ लोग होते हैं कि ट्रेनिंग पीपल वांट टू लर्न मोर, रेस्पॉन्सिबिलिटी, सेल्फ रेस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, सो केस स्टडी, इंडिविजुअल मोटिवेशन का एक केस है, दिस इज अ theoretical historical, you can go through this। we are skipping this comments on case study again when we will read it। okay guys, CR kindly note this। इस स्लाइड नंबर 32 का जो केस स्टडी है सबके सब पढ़ के, ओके, जो कि आई मीन केस स्टडी से, फॉर एग्जांपल इफ यू डोंट सॉर्ट आउट द प्रॉब्लम ऑफ अनएक्सेप्टेबल वर्क, and the other group members will become dissatisfied and feel that they are doing on an unfair share of the work। personal difficulties affect the motivation because some people can't concentrate on their work, they need time and support to resolve these issues, although they have you have to make clear that they still have a responsibility to work in their employer। anyways there's nothing, CR छोड़ दें, ये assignment या एक होमवर्क से रिलेटेड नहीं है। मूविंग अहेड, पर्सनालिटी टाइप्स में हमारे पास डिफरेंट किस्म के पर्सनालिटी से रिलेटेड लोग हैं।
task oriented, self-oriented, interaction oriented. So all these are the simple things need to be covered yourself. Teamwork hai. Teamwork again is very simple. What we understand, and mostly we have teamwork. We have studied. We have covered in the, especially in agile, what is the importance of the small groups of the people, or a good group of the people, or whatever the same skilled peoples, whatever. ग्रुप कोहेसिवनेस इज अगेन इम्पॉर्टेंट. वही एजाइल में भी हमने कवर किया था, जैसे पेयर प्रोग्रामिंग है, या एक जैसे ही लोग जो है एक किस्म के स्किल्स के बेस पे, नेचर के बेस पे, यानी कि मेन मोटिव जो है प्रोजेक्ट मैनेजर का है कि प्रोजेक्ट को सक्सेस करना. ठीक है, कन्फ्लिक्टिंग मेंबर्स हैं तो डेफिनेटली उनको कन्फ्लिक्ट अवॉइड करने की जो कॉम्बिनेशन है उससे मैं अगर किसी के साथ काम नहीं कर सकता तो डेफिनेटली मुझे चेंज किया जाए या अगले को चेंज किया जाए, क्योंकि आपका अफेक्ट तो प्रोजेक्ट तो अफेक्ट ना हो ना. ओके, so effectiveness of team, okay, we people in group organization, technical and managerial communications. Okay, selecting the group members वो भी skills के base पे, personalities के base पे. There should be the balance between that. Selection should be based on that thing. Okay, assembling a team वही important है कि project budget may not allow for the use of highly paid staff. Staff with the appropriate experience may not be available. An organization may wish to develop the employee skills on a software project. The managers have to work within these constraints, especially when there are shortages of the trained staff. Again, किस किस्म का आप staff उठा रहे हैं depending on your type of company. Okay. Then we have the this group organization. It's simple to understand. Okay, हमारे पास informal groups हैं. There's nothing technical to understand. The groups acts as a whole and comes to a consensus on decisions affecting the system. The group leader serves as the external interface of the group that does not allocate the specific work items. Rather, work is discussed by the group as a whole, and tasks are allocated according to the ability and experience. This approach is successful for groups where all members are experienced and competent. Okay, so definitely sometimes we have, the group which is going to be the head in sense के जो policies की level पे जिस का काम होता है कि for example the approach is successful for groups where all members are experienced and competent. Group communication वही चीजें हैं कि good communication, effective communication हो, technology के usage हो in case of they are not meeting on daily basis. ये common चीजें हैं जो already हम especially agile में बहुत detail में पढ़ चुके हैं. तो group communications है वो भी depend करता है group size पे, group structure, group composition and physical work environment. Anyways, all these are the simple and textual theoretical thing. So this was all about this chapter, guys. So now we are left with one only, the last one, and very easy dependable systems. That's not again the technical top chapter. Anyways, but it's in course outlines. We need to cover it. I think we should finish it today. So what you suggest, guys? Still we have the time. Like what's time now? So 11:30. Okay, so guys, go for 10 minutes break. We will finish this in when we will be back. It will not take more than 15 to 20 minutes. Then we are finished course. So guys, we are coming back after 10 minutes, right? Yes, sir. Thank you, guys. So stop. Can you stop recording and we will resume? Okay, guys. So let's meet after 10 to 10 minutes. Thank you. यस सर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके स्टार्ट करें सर.
Formal methods and dependability. 1 minute, guys. So the system dependability for many computer-based systems, the most important system property is the dependability of the system. Dependability of the system reflects the user's degree of trust that in that system. It reflects the extent of user's confidence that it will operate as users expect and will not fail in normal use. Definitely, system is dependable. What we ask, okay, what type of system is developed should work accordingly. Dependability covers the related systems attributes of reliability, availability, and security. So definitely, if we look at this, so these are the all properties, non-functional properties are need to be checked in dependability. Okay. उसके भाई इंटीग्रिटी क्या है डेटा की डिपेंडेबल at how much level we should rely on this system. So the importance of dependability is system failures may have widespread effect with the large number of people affected by the failure. Systems that are not dependable or unreliable, unsafe or insecure may be rejected by their users. So again, as I told, these are the properties related to non-functional requirements, and definitely these are as important is we have the functional requirements or functional properties of that particular system. So undependable systems may cause information loss with high consequence recovery cost. So definitely those systems which are not dependable definitely have the issues. The causes of the failure, three main causes are hardware failure, software failure, operation failure. These are again very simple. Skipping that. So we have the principal dependability properties. So in dependability, what we check, the availability of software. In case of web-based, when we need, maybe it's not available. So availability example is the cloud storage. So definitely when we want to extract our data at any type of any cloud storage services, so we need to have the question, okay, will it be available when I'll be approaching my stored documents? In finance related systems, फाइनेंस में अगर हम देखते हैं तो डेफिनेटली व्हेन वी what is the how the banks are working. Okay, when we are putting our money in banks, we have the question what when we will want that money back. So will it be available for us? Will that bank return us or not? Whatever. So the reliability, the ability of the system to deliver services is specified. Safety, the ability of the system to operate without catastrophic failure, the ability of the system to protect itself against deliberate or accidental intrusion. Security, it's the security. The data which is saved in your system should be protected. The data which is going to be uploaded on that particular cloud storage need to be secure. तो security में हमने पढ़ा हुआ है कि cover security with through the cryptographic techniques. We have the encryption and decryption when we transmit the data, when we secure the data, when definitely in that we have assuming we have the plain text that is need to be converted into the cipher. So cipher is again coding. So it's secured through the cryptographic encrypting that particular plain text.
So vice versa at receiving, that cipher is going to be converted into the plain text. Anyways, then resilience, and definitely the ability of a system to resist and recover the damaging events. Even the resilience to the attacks is insecurity. Maybe that system is going to be attacked. Maybe that system, for example, we have the web system that can have the attacks like the denial of service attacks, DOS attacks. Maybe that is, so resilience to DOS attacks, there should be the mechanism to cover that. And again, it's the security property. So resilience to damages and whatever the recovery. Okay. Anyways, these were the dependability properties, principal dependability properties I have explained. So explanation is here: availability, reliability, safety, security, resilience, repairability, maintainability, error control, error tolerance. These are all again explained already. And dependability attribute dependencies. The safe system operation depends on the system being available and operating reliably. A system may be unreliable because its data has been corrupted by external attack. Denial of service attacks on a system are intended to make it unavailable. If the system is infected with a virus, you cannot be confident in its reliability or safety. So these are the again the attributes कि जब virus लग जाए, maybe unwanted कोई problem आ जाए कि is that the system or the data has the backups, or the denial of service attacks are launched, how your system is going to deal with it. So definitely we have the example of the web-based systems. So normally web-based systems are prone to the denial of service attacks. If you take an example of Sakar IBA website, so that can be to avoid the denial of service attacks. So I have already explained various times, giving the example of HTTP requests and HTTP responses. If the system is not capable of handling a couple of HTTP requests simultaneously, so if that system is not going to respond to those HTTP requests, what we call it the HTTP response expected from that particular web server, so definitely that is the denial of service attack. And we know the solution. So what is the solution normally, CR, to avoid the denial of service attacks on web servers? Syed Mohammad Ahmed. Right? Sir, recapture. Hello, sir. G. Hello. जी हाँ सर आपका आवाज normally is the solution to the denial of service attacks, the widely the main problem in web servers is, so in case for example any machine launches the automated planned programmed HTTP request attack, so how to stop that, how to detect that even first. So I've told so many times in different classes. Anybody? Sir, to use recaptcha क्या इस्तेमाल करते हैं? सर कैप्चर होता है. Yeah. So one of the solution to this is, so we go through the captcha. For example, how machine knows. So for example, from this machine, I'm going to send various couple of HTTP requests. Means this machine has the IP address. For example, we are saying that this machine has 192.168.1.1 is going to send HTTP request to the Sakar IBA web server. And maybe from this machine, again, after a few seconds, another HTTP request is sent. After a few minutes, another third HTTP request is sent. Assuming in last 5 minutes, this IP address has sent the more than 10 HTTP requests to the Sakar IBA web server. Sorry, guys. So what it is? So automatically that web server is going to verify, is going to give something.
So what appears in front of us, I'm not robot or whatever we have the captcha techniques. Either it's the textual, maybe the special characters, maybe the images are there. So depending on which type of the captcha algorithms you are going to use. So this is going to stop the automated denial of service attacks on any web server. Anyways, moving ahead, dependability achievement, avoid the introduction of accidental errors when developing the system. Designing the verification and validation processes that are effective in discovering the residual errors in the system. Design systems to be fault tolerant so that they can continue in operation with the faults occur. Designing the protection mechanism that guard against the external attacks. So definitely in this chapter, we are going to cover especially non-functional attribute, non-functional properties, what we call based on the non-functional requirements. Okay, and definitely we have there should be the attacks taxonomy or the security properties mechanisms. For example, maybe I have already told we have the application layer application based security parameters. So application पे कौन से आ सकते हैं? For example, we have username and password, accessibility issues. Then we have the network level security issues are there. So maybe we have the issues related to transmission of the data from one node to the another node. Then we have the information level issues. Information is secure or not. So the solution to this is definitely the cryptographic techniques. The encryption and decryption is the only the efficient way to protect your data, to convert that plain text into the cipher, as I've already told. Anyways, moving ahead, guys. So the dependability achievement, configure the system correctly for its operating environment. And configuration is again very important. And definitely it is when we have the involvement of different systems or subsystems, or maybe the system of systems. So definitely it need to be what we call it, even in wireless communication, even the synchronization is not proper. So definitely that is not going to work, because all this is maybe from one system. Taking an example of the attendance system, what we have. If you are saying that this attendance system is integrated with the finance department, and again that finance department system is integrated with the bank. So based on the attendance, the person's salary should need to be calculated based on his or her present days of that particular month. So this is again the integration of the different systems. Okay, so definitely if these are not integrated properly, definitely dependability achievement is going to be compromised. Include the system capabilities to recognize and resist the cyber attacks. As I have already told, we have the security levels from application to the network. Okay, so these need to be properly implemented in, and again, based on this, we are going to achieve the dependability. And then we have the dependability costs. And definitely cost is what? Cost is involvement of the resources. Either it's the schedule, either it's the budget, or even the human resources. Okay. So cost, dependability curve is there.
So definitely, if you are going to increase the cost, definitely dependability is going to be increased exponentially. Dependability economics, because of very high cost of dependability achievement, it may be more cost effective to accept the untrustworthy systems and pay for failure cost. However, this depends on social and political factors. A reputation for products that cannot be trusted may lose future business. And definitely, again, the society, the thing, for example, in this, if we take an example of the technology related products, we have the simple example of Samsung and iPhone. So definitely those social effects in this are, so these are the both competitors. They definitely, they're even launching small event of launching affects the another product launched by the launched by whatever the vice versa, the Samsung or the Apple is going to, the business is going to affect. Normally in we know that in every September, I'm assuming Apple is going to launch its product. So what Samsung is going to do is, Samsung is trying to launch before the September, because these are the both competitors, and definitely their products are almost same, and definitely, so this is going to, this is a minor thing in this thing which is going to affect the business, especially the business economics. Depends on system type. For example, the business systems in particular, modest levels of dependability may be adequate. Anyways, this is already discussed. So we have the socio-technical systems and softwares. These are the things we have already discussed. We have socio-technical system is stack है हमारे पास, उसमें definitely it's a layered based equipment, then the operating system for that equipment, the communication and data management of those, definitely the operating system, if the operating system is there. So definitely there will be the involvement of the different applications, their data, their communication, if it is the web-based or not, networked or not, application system. Then we have the business processes, the organization, then the society. So this is the socio-technical system stack, okay? And this is, if you look at this, the business process, we have, this application system, communication and data management, and operating system. These are purely related to software engineering, and system engineering deals with from the very equipment, hardwares, till we have the organization and business processes. So these are the explanation we have already discussed: equipment, operating system, communication and data management, application systems, business processes, organization, society. Okay. We have then regulation and compliance. Again, it's the theoretical thing. Nothing is technical to discuss. The general model of economic organization that is now almost universal in the world is that privately owned companies offer goods and services to make a profit of these. To ensure the safety of their citizens, most governments limit the freedom of privately owned companies so that they must follow the certain standards to ensure their products are safe, secure. So again, regulatory bodies are different in different countries, okay? Like in Pakistan, especially in South Asian countries and Pakistan, especially the Pakistan, we don't have the piracy laws, okay? So you will find the operating system, Windows operating system, you will find this complete software package in 30 rupees CD. So the piracy law is not effective in Pakistan. So it's not that. So actually that particular software is it has the product key. It needs to be used for that particular one computer system. But here, depending on the, even we have for the critical systems, like the nuclear systems, air traffic control systems, medical devices, or the hospital management system, or even the systems related to e-healthcare systems. So these are the very critical, need to go through the proper implementation and testing. Until and unless
that is not tested properly, and definitely these are the very critical. Air traffic control system आप हर किस्म की I mean system testing and all this the deployment testing and even the after the deployment you have means the information from such systems is very critical, life threatening in other words. A sensor node which is dedicated for pulse monitoring, if it is going to give the incorrect calculations, and definitely that is going to affect the human life. Okay, so how the systems are regulated depending on the country or the states or the international law. Redundancy and diversity, these are again the same things. वही चीजें हैं कि हम भाई for example single version available है नहीं है, do we have the backups of this or not? Okay, in case of emergency, in case of failure, what we are going to do. Diversity, they provide the same functionality in different ways, in different components, so that they will not fail in same way. So these need to be diversified and they need to be separated. I mean, the risk is going to be divided on every component. And definitely the smart project management is what? It is going to minimize the risk, okay? So the redundant and diverse components should be dependent so that they will not suffer from the common mod failures, okay? One point failure, what we call it, okay? So if there is the failure, if something fails, means every component of that system should not fail, okay? So these are the things, guys. There's nothing technical in this. These are simple and self-explanatory. You can go through this if you have any problems, dependable processes, okay? I'm available before even we can schedule. Then there's the comparison of the dependable processes and the agility, formal methods and dependability, formal specifications. वही हैं जो हमने cover की हुई हैं कि we have the formal specification analysis and proof, transformational development, program verification. All these things are already discussed in class, even in online classes. Formal approaches हैं हमारे पास वही हैं, verification based approaches, refined based approaches. This is the new thing, refined based approach. A representation of system is systematically transformed into the the lower level representation. For example, specification is transformed automatically into an implementation. This means that if the transformation is correct, the representations are equivalent. So again, refinement based are depending on your specifications and then changes in that specification. Anyways, that's again we have discussed. Use of formal methods. Maybe we have this. The principal benefits of the formal methods are reducing the number of faults in systems. Consequently, their main area of applicability is in dependable systems engineering. There have been several successful projects where formal methods have been used in this area. In this area, the use of formal methods is most likely to be cost effective because high system failure cost must be avoided. Again, high system failure cost. Definitely, when we divide the risk, definitely we are going to divide the risk of main project failure, okay? So we have the classes of error. Again, we know that we have already discussed the specification and design errors, their omissions, inconsistency between the specification and a program. All these are same. Whatever the specification provided by customer is not consistent with the program or the development benefits for the formal. Then we have the benefits of formal specification. This is again, we have discussed this acceptance of formal methods, discussed already. So guys, this was all about the dependable systems and the last chapter of our course outlines based on the course outlines. Okay, guys. Remember one thing.
So till the evolution, all the separate chapters were dedicated for the development activities. You saw the first two chapters were introductory. Then we have the introduction to the agile. Then we came up with the chapters with specifications, what we call it, the requirement engineering. Then we have the design and implementation. Implementation ke baad testing, validations related. And finally, we were having the evolution, and then the introduction to the project management, and finally the introduction to the dependable systems, especially the requirements, non-functional requirements, what we call it, the reliability, okay, dependability, availability, okay, and all these. Okay, guys. So this was all about today's class, guys. We will be updated on WhatsApp. If you have any issues, any problems, I'm available. Okay, guys. So Aftab, can you, extract and upload this on Dropbox and share the link with your classmates of today's Zoom?